Our first step is to measure the base. हम सबसे पहले जो base है वो measure करेंगे. So make sure you have a digital scale जिसपे आप अपने soap को measure कर सको. soap base को I mean. तो आप अपने mold के हिसाब से अपने soap base को weigh कर लेना है. Mold के capacity के according you will measure the base. So my capacity of the mold is around 100 to 120 grams. तो मैं 100 soap बनाऊंगी. I'll give you the measurements according to 100 grams. So let's start. सबसे पहले आज हम बनाने वाले हैं coffee soap. So let me measure the base. Here you can take any base. It's your choice. There are many bases available in the market. So you can take goat milk base, opaque base, transparent base, glycerin base, coffee base भी available है. So you can take coffee base also. तो सबसे पहला है हमारा measure कर लेने का base measurement. Next is to take any micro safe jar container जहाँ पे अपने base को आप काट सको smaller pieces में और melt कर सको. Okay? तो मैंने measure करने के बाद our next step is to cut the base. So let me cut it into smaller pieces. Let everyone join. फिर हम discuss करेंगे what are the benefits of this soap. Okay. Coffee soap is very good for the skin. आजकल बहुत trend में भी है. You can see many of the brands are making coffee ingredients which we can use on our skin. So let us also formulate one of them. Hi Nunuji. Hi Viru. Good afternoon. Welcome all of you. So हम स्मॉलर पीसेस में क्यों काटते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो तुरंत मेल्ट हो जाए और हमारी बेस की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे. I have taken your transparent base. You can use any base as I said. I hope सभी को कॉफी सोप की बेनिफिट्स पता होंगे, but I'll make sure I'll also share with you the what are the benefits of the coffee soap. But before that I'll cut the base into smaller pieces. तो हमने यहाँ तक क्या किया है, सबसे पहले हमने वेइंग स्केल ली है, उस पे अपने बेस को मेजर कर लिया है. यू हैव टू मेजर द बेस अकॉर्डिंग टू योर मोल्ड कैपेसिटी. आप अपने मोल्ड के कैपेसिटी के हिसाब से अपने बेस को मेजर करना है. सो आई एम गोइंग टू शेयर द क्या बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ 100 ग्राम्स, क्योंकि मेरा जो मोल्ड कैपेसिटी है वो अराउंड 100 to 120 ग्राम्स है. तो हमने मेजर कर लिया था बेस. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक एनी माइक्रोसिप जार कंटेनर. सो यू कैन कट योर बेस इनटू स्मॉलर पीसेस in that. So here there are two methods to melt your base. अब तक तो सबको पता होगा, बट कोई नया होगा उनके लिए रिपीट कर लेती हूँ. There are two methods to melt a base. First is to use microwave for 30 seconds and second is to use double boiler method. ये दो मेथड है जिससे आप अपने बेस को मेल्ट कर सकते हो. I hope till everyone is clear with the concept how to formulate coffee soap. Next is, let's share the benefits of the soap. तो benefits क्या है ये soap के?
Coffee is a very good ingredient for your skin. It reduces the dullness, puffiness, डार्क सर्कल्स को भी ये रिड्यूस करेगा. फिर ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा. आफ्टर दैट इट विल रिड्यूस या प्रिवेंट यू फ्रॉम सनबर्न. एक्सफोलिएट करेगा. इट इज अ वेरी माइल्ड एक्सफोलिएटर. It enhances the blood circulation. It has anti-aging properties. Glowing skin के लिए बहुत useful है. Also, अगर cellulite का कोई issue होता है, वो भी over a period of time you can see the reduction in your cellulite also. तो यही सारे benefits है. There are amazing benefits of this coffee soap. You should try it. और थोड़े समय के बाद आपको इसके रिजल्ट जरूर दिखेंगे. तो मेरा मोस्टली ऑलमोस्ट कट करके हो चुका है बेस. थोड़ा सा ही अब बचा है. My next step is to melt the base. I'll use a microwave to melt my base. मैं माइक्रोवेव यूज करूंगी मेरे बेस को मेल्ट करने के लिए. So I'll need a 1 minute, नहीं 1 minute से कम ब्रेक, ताकि मैं जो मेरा जार है वो मेल्ट करने के बेस मेल्ट करने के लिए रख के आ सकूं. तब तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेंशन कर लीजिए. आई ट्राई टू सॉल्व देम. सो ये देखो ये कट करके हो चुका है. नाउ आई keep it in microwave and come in a minute. So okay, तब तक ये मेल्ट हो जाए हम लोग प्रिपेयर करते हैं द एडिटिव्स व्हिच वी आर गोइंग टू ऐड इनटू द सोप. तो मैंने लिया है हाफ टी स्पून ऑफ कॉफी. Here you can use any coffee, but I'm going to use Nescafe, because this coffee has 99% of chicory in it. So I'm going to use that coffee. तो मैंने हाफ टी स्पून कॉफी लिया है. And I'm going to make a paste. यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, you can use a carrier oil or you can use coffee extract also to make a paste. Just 1/4 teaspoon is enough, क्योंकि कॉफी डिसॉल्व हो जाएगी बहुत ही इजीली. So no need to add more than 1/4 teaspoon. तो मैं ऐड करने वाली हूँ. You can use carrier oil, you can use coffee extract, it's your choice, but ध्यान रहे it is only 1/4 teaspoon. तो मैं ये डालने वाली हूँ इसके अंदर कॉफी. क्योंकि कॉफी थोड़ी सी ये हो गई है स्टक. इसी को मैं मेल्ट कर दूँ. ये तुरंत ही डिसॉल्व हो जाएगी. कॉफी की फ्रेग्रेंस बहुत ही मतलब रिफ्रेशिंग होती है. तुरंत ही रिफ्रेश लगने लगता है when you smell the fragrance of this coffee. तो ये बस अब मैं देख कर आती हूँ कि मेरा बेस जो है वो मेल्ट हो चुका है या नहीं. तब तक मैं इसे साइड में रखती हूँ.
My base is melted. आप देख सकते हो, it is completely melted. तो नेक्स्ट स्टेप इज, जब हमने ये बेस मेल्ट हो रहा था ना, तब हमने एडिटिव्स रेडी कर लिया था. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड द एडिटिव फर्स्ट एज अ कॉफी पेस्ट इनटू द सोप. अच्छे से मिक्स कर लीजिए. यू कैन सी द बेस इज चेंजिंग द कलर. So your very nice fragrance is coming, but this fragrance would not be enough. So we'll add additional fragrance as a coffee fragrance into this base. Okay. I'm not going to add color. If you want to add color, you can add 1 to 2 drops of brown color into your soap base. But I'm going to skip the color because I have get the desired color after adding the coffee paste. तो इसके बेनिफिट्स आपने देखा. एक छोटा सा, दिस कॉफी सोप विल गिव यू so much of benefits. So next step is to add the कॉफी फ्रेग्रेंस. मैं कॉफी फ्रेग्रेंस डालने वाली हूँ. कितना डालोगे आप? अपने 20 to 25 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेग्रेंस ऑयल डालोगे आप कॉफी का, विच इज इजीली अवेलेबल. ओके, नाउ लेट मी, इसका वो जो पियर्सिंग किया हुआ ना, दैट इज वेरी स्मॉल. आई जस्ट चेक इट नाउ. स्टर इट कंप्लीटली. ध्यान रहे कि आप सारे एडिटिव्स एक साथ ना डालो. यू हैव टू ऐड इट वन आफ्टर अनदर. पहला एडिटिव डालो, मिक्स कर लीजिए, देन यू कैन ऐड द सेकेंड एंड द लेटर ऑन यू कैन ऐड इट बाय मिक्सचरिंग इट. ओके. अब ज्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस, strong fragrance you can say. The first one was little mild, only coffee was added and the fragrance was there. अगर आपके पास, अगर आप try कर रहे first time, okay, you are not having any material, you are having just the base, so you can try only adding the coffee. It will give you a very mild fragrance when you bath. But when you add, if you have easily you आपको मिल जाता है, you get it easily fragrance oil, so you can add coffee fragrance and see the difference. ऐसे नहीं है कि सिर्फ कॉफी डालने से आपको फ्रेग्रेंस नहीं आएगा, आएगा, but it will be very mild. But when you will add the coffee fragrance ना, it will be much more stronger fragrance than that mild fragrance. Okay. The next step is I'm going to add essential oil. अगर आप completely beginner हो, you can skip essential oil. और अगर आप डाल रहे हो तो ध्यान रहे, आप जानकारी हो आपको essential oil के बारे में, आप अपने स्किन के कंसर्न के हिसाब से डालो या आपके स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग. So add to 10 to 12 drops of essential oil. मैंने कलर तो लिया था, बट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड द कलर बिकॉज आई एम गेटिंग इट प्रॉपर कलर विच आई वाज विलिंग टू गेट इट. डिजायर्ड कलर मुझे मिल चुका है.
So I'm not going to add any additional color. So let me repeat it, give you a quick recap कि हमने यहाँ तक क्या किया है. सबसे पहले हमने तो बेस जो है वो मेजर कर लिया है. बेस अकॉर्डिंग टू योर मोल्ड कैपेसिटी आप मेजर करोगे वेइंग स्केल के ऊपर. मैंने आपको मेजरमेंट दिया है वो अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम्स है, क्योंकि मेरा भी जो मोल्ड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 100 to 120 ग्राम्स. तो हमने सबसे पहले बेस को मेजर कर लिया था. देन आई माइक्रोसिव जार लिया है. यू कैन टेक एनी माइक्रोसिव जार, हीट प्रूफ जार यू कैन से. उसमें अपने बेस को स्मॉलर पीसेस में कट कर लिया है. आफ्टर दैट, आफ्टर कटिंग द बेस इनटू स्मॉलर पीसेस, आपके पास दो मेथड होते हैं अपने बेस को मेल्ट करने के लिए. ओके, the first one is to microwave your base for 30 seconds, and second is you can microwave your you can double boiler your base to melt it. Okay, there are two methods to melt the base. जब ये बेस मेल्ट हो रहा था तब हमने एडिटिव्स की रेडी प्रिपरेशन कर ली थी. तो मैंने लिया है हाफ टी स्पून ऑफ कॉफी पाउडर. You can use carrier oil or coffee extract. 1/4 teaspoon is enough क्योंकि कॉफी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा. So you can 1/4 teaspoon is enough. तो आप उसको मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए जैसे हमने बना ली थी. फिर आपने जब ये पेस्ट बना के रखा था और हमारा बेस रेडी हो चुका था मेल्ट होके, तो फर्स्ट एडिटिव विच वी एडेड वाज कॉफी पेस्ट. ओके, सबसे पहले हमने कॉफी पेस्ट डाला था और जैसे ये डाला था आपने देखा होगा बेस का कलर कंप्लीटली चेंज हो गया था. सो लेट मी चेक द मोल्ड. फिर आई अगेन कंटिन्यू विद द मेथड जैसे हमने क्या कैसे बनाया है सोप को. तो मेक श्योर योर जो मोल्ड है वो क्लीन हो, ड्राई हो. और नेक्स्ट स्टेप इज टू pour the base into the mold. Okay. Just a little bit icy on the top of it ताकि सारे बबल्स जो है वो रिमूव हो जाए और क्लीन एंड स्मूथ सरफेस हमारे सोप को मिले. हाँ, तो मैं कहाँ पे थी. हाँ, तो ये जो बेल्ट हो गया था बेस, उसी के अंदर सबसे पहले हमने ये डाला था व्हाट, कॉफी पेस्ट. लेट मी रिमूव द ग्लोव्स ताकि किसी के क्वेश्चन जो हो वो मैं ले सकूं. फिर नेक्स्ट इज टू ऐड कलर. अगर आपको डिजायर्ड कलर नहीं मिला, 99% यू गेट द डिजायर्ड कलर, बट नहीं मिला हो तो यू कैन ऐड ब्राउन कलर, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्राउन कलर. देखो मैंने लिया भी था बट आई डिडंट एडेड द कलर. ओके, देन आई एडेड द फ्रेग्रेंस ऑयल. फ्रेग्रेंस ऑयल आप कॉफी सोप बना रहे हो, कॉफी सोप फ्रेग्रेंस डाल दीजिए 20 to 25 ड्रॉप्स. अगेन मिक्स इट कंप्लीटली. कैसे ही दोनों कॉफी पेस्ट डाला, मिक्स कर लिया ना, फ्रेग्रेंस ऑयल डाला हमने, मिक्स कर लिया. वैसे ही एसेंशियल ऑयल डालना है आपको एंड देन अगेन यू हैव टू मिक्स इट कंप्लीटली. जैसे ही ये मिक्स हो जाए, मेक श्योर योर मोल्ड, यू टेक द मोल्ड विच इज क्लीन एंड ड्राई, और आप अपने जो बेस को है वो पोर कर दोगे मोल्ड के अंदर. जैसे ये सेट हो जाए, यू विल अनमोल्ड इट. आप तुरंत ही बेस को अनमोल्ड कर लीजिए, सोप को, सॉरी, एंड यू विल रैप इट. ओके, अपने बेस को, सॉरी, सोप को अनमोल्ड करके रैप करना है फॉर इट्स हाइजीन पर्पस ऑल्सो एंड इट्स शेल्फ लाइफ ऑल्सो. ओके, तो यही था हमारा मेथड. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट मी टेक. हाँ, हाय हाय बोला मैंने सभी को, हाय, हेलो एंड वेलकम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. बेस के लिए क्या क्या लिया है? बेस के लिए सिर्फ बेस ही लेना है अंशुल जी आपको. सो यू कैन टेक एनी बेस जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है. ओके, इसे कुछ वक्त लगेगा सेट होने के लिए.
can say depends on the temperature. कभी कभी it sets in half an hour also, कभी उससे ज्यादा भी time लग जाता है. But after that, once it's set, please unmold and wrap it. अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेंशन कर लीजिए, otherwise I'll give you again a recap and align the session. और मैंने आपको बताया ही था इसकी बेनिफिट्स. It's a very simple, everything you will get in the kitchen except the base fragrance. और जो आपने main additive डाला है आपके kitchen में easily available है, which is coffee powder. You can use it and you can see the difference in your skin within a period of time. आप थोड़े समय तक यूज करोगे, आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा आपके स्किन के अंदर. Is there anyone who is having any doubt? Otherwise, I'll give you a recap over here कि हमने कैसे इसे formulate किया. upper layer is set, but अंदर से वो अभी भी गीला है. So mostly तो ये आपको यहाँ पे मैं अनमोल्ड करके नहीं दिखा सकती हूँ. So let me give a recap over here and I'll end the session. तो हमने बनाया आज कॉफी सोप. ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो वेइंग स्केल लिया था जिसपे हम अपने बेस को मेजर कर सके अपने मोल्ड के कैपेसिटी के हिसाब से. तो आपको बेस लेना है, वे कर लेना है. आफ्टर दैट विल टेक इट माइक्रोवेव सेफ कंटेनर, जार, व्हाटएवर यू कैन से, हीट प्रूफ, जिसमें आप अपने बेस को कट कर सको. आफ्टर दैट विल कट योर बेस इनटू स्मॉलर पीसेस एंड यू विल मेल्ट इट. मेल्ट करने के लिए जैसे मैंने बोला है, देयर आर टू मेथड्स टू मेल्ट द बेस. फर्स्ट इज to use microwave to melt your base for 30 seconds, and second is to use a double boiler method. Make sure you're not reheating your base again and again, because when you reheat your base, the base quality reduces. So make sure you're not reheating your base. After that, ये base melt हो जाए, make sure you, तब तक ये melt हो रहा है, you preparing the additives. तो हमने लिया था half teaspoon of coffee powder in 1/4 teaspoon of, you can take carrier oil or you can use a coffee extract also to make a paste. जैसे ये paste ready हो गया था, हमने base देखा था, it was completely melted, तो हम लेके आ गए थे यहाँ पे. First step is to add the coffee paste which we made it. और हमने सबसे पहले वो ही डाला था हमारे बेस के अंदर, मेल्टेड बेस के अंदर. नाउ यू कैन से मेल्टेड बेस. सो यू कैन ऐड इट एंड मिक्स इट. जैसे आप कॉफी पेस्ट डालोगे ना, आप अपने बेस को कलर चेंज में दिखोगे. एंड इफ यू आर desired color you are getting it, so no need to add any additional color. Sorry. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, it is a light color, so you can add brown color also. You can add 1 to 2 drops of brown color. फिर आप जैसे ही कॉफी डालोगे, see the fragrance in your base, but that base fragrance is not enough. Okay,
So we'll add for that additional fragrance, we'll add fragrance oil. For fragrance oil, you can use coffee fragrance because हम coffee soap बना रहे हैं. So you'll add 20 to 25 drops of coffee fragrance. Make sure you are mixing it properly. पहले हमने डाला था coffee paste. Make sure you are mixing it properly. The second additive was fragrance oil. यहाँ पे हमने color नहीं डाला है. You can add, it's your choice. Next is to add essential oil. जैसे मैंने बोला था essential oil. अगर आप completely beginner हो, you can skip it. और अब आपको जानकारी है essential oil के बारे में, so you can use it according to your skin concern या skin type. आप वो डालने के बाद make sure वापस अच्छे से stir दे दो अपने बेस को. After stirring it properly, giving it a mix proper, you'll make sure your mold is clean and dry. आप अपने mold के अंदर जो बेस ready हो चुका है, which is going to take which you are going to convert your base into a soap, is ready to pour into the mold. आप अपने base को mold के अंदर pour कर दीजिए. And now we'll wait for say half an hour, 1 hour, okay? Depends on the temperature in your area. जैसे ये set हो जाए, make sure you are unmolding it and wrapping it. Okay? आप अपने soap को for its hygiene purpose, shelf life, will wrap the soap. And this soaps, melt and pour soaps are ready to use on the same day itself. Okay, and the shelf life of the soap will be decided on the raw material used by you. So I hope I have repeated it and everyone is clear with how to formulate this amazing soap. It has a very good benefits. एक soap है but it has multiple benefits. So do try it and see the difference in your skin after a period of time. Okay, अगर किसी को कोई doubt हो तो mention कर लीजिए, otherwise I'll end my session over here. Sorry. Bye everyone. Thank you everyone for joining. Bye bye. Take care.